उधर सांबर है, इधर टाइगर। सांबर उधर से कॉल आ रही है। कॉल आ रही? हाँ हाँ, ये अलार्म कॉल होती है। ये हाँ, हो सकता है टाइगर इधर ही उतरेगा जब आगे सांबर है ना। लेकिन टाइगर है और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एनिमल है। Hello wildlife lovers and welcome to another virtual wildlife safari from Discover Wild Paws. Today, as you all saw in the title and thumbnail of the video, we are going to take you to Zone 4 of Ranthambore National Park. This video is a part of our ongoing Ranthambore series. Earlier, we released a video on our experience in Zone 2. If you have not watched that already, please find the link in the video description. So this was an afternoon safari and we reached the zone entry gate on time. There was some speculations around Shakti and cubs being sighted in this zone. Then there was also news around Ridhi and Ganesh moving between this zone and Zone 3. So the hopes were really high. The journey began with our guide briefing us all about a few essentials of the safari. Even though we have done a lot of safaris, we still enjoy listening to these local experts on the forest rules. Their tone makes it much more thrilling. Here's some of it for you all to listen. जैसे रूट नंबर 4 हमको मिला है, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा रूट है। 70+ टाइगर यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। हर रूट पे किसी पे 6 से 7, किसी पे 7 से 8, इस तरीके से टाइगर है। लोग टाइगर देखने आए, लेकिन टाइगर एक चांस की बात है। मोमेंट अगर होगा तो बहुत अच्छा साइटिंग भी होगा। बाकी आप ये ना सोचें कि खाली आप टाइगर ही देखना है, आप ये मान के चलें कि आपको वाइल्ड लाइफ एंजॉय करना है। टाइगर के अलावा 2 तरीके के एंटीलॉप्स हैं। एक लार्जेस्ट एंटीलॉप है ब्लू बुल, जो नीलगाय हम बोलते हैं। दूसरा है इंडियन गजल, जिसको हम चिंकारा बोलते हैं। 2 तरीके के डियर्स आपको देखने को मिलेंगे। स्पॉटेड डियर है, सांबर डियर है। उसके अलावा क्रोकोडाइल है। रेयर में यहाँ पे लेपर्ड, जंगल कैट, कैरेकल, हाइना और स्लोथ डियर। ये इतने रेयर हैं कि 100 में से 90 बार आपको टाइगर दिख जाएगा, लेकिन हो सकता है ये आपको एक ही बार दिखे। उसके अलावा देखिए, खाने पीने की कोई भी चीज़ आप लाएं, बशर्ते आप खाएं, लेकिन रैपर और गार्बेज अपने को बाहर नहीं फेंकना, गाड़ी के अंदर रखना है। साइड वाली पॉकेट में कोई भी वैल्यूएबल थिंग जैसे वॉलेट है, मोबाइल है, ये ना रखें, क्योंकि बम्प की वजह से हो सकता है गिर जाए, अपना नुकसान हो जाएगा। आगे जैसे जैसे जो भी दिखता जाएगा मैं रोकता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। देखिए, कई बार क्या होता है, हमसे भी बढ़िया आँखें आपकी भी हो सकती है, आपकी नज़र हमसे भी तेज़ हो सकती है। तो यहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करते हुए अपनी साइड देखना है। कई बार हमसे चूक जाता है, हो सकता है आप पकड़ लेते। टाइगर को फाइंड आउट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है फुटप्रिंट, जिसको हम बोलते हैं पगमार्क।
दूसरा होता है अलार्म कॉल। अलार्म कॉल इन द सेंस जब बड़ी बिग कैट्स को देख के, जैसे लेपर्ड टाइगर को देख करके दूसरे जानवर जो हैं वो एक कॉल करते हैं। उस कॉल में एक डर होता है। हम उस डर की आवाज़ को, कॉल को कंसंट्रेट करके पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि फॉलो करके आपके लिए कुछ रिजल्ट निकाल सकें। ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का कोऑपरेट होगा। आपका कोऑपरेट इन द सेंस आपने कुछ नहीं करना है, वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करते हुए बिल्कुल शांति बना के रखनी है ताकि हम कॉल सुन सकें और आपके लिए फॉलो कर सकें। देखिए मूवमेंट बहुत अच्छा है। 4 नंबर पे मॉर्निंग में भी साइटिंग हुई है, बट फिंगर्स क्रॉस, कोशिश, विल ट्राई आवर बेस्ट, विल पुट आवर ऑल एफर्ट्स व्हाटएवर वी कैन डू। बाकी देखते हैं, मनी मन में गणेश जी का नाम लीजिए, चलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कोई भी मन में क्वेरी हो आप बिल्कुल पूछें, मैं तैयार हूँ। एक्चुअली गार्ड को यहाँ पे फीमेल और तीनों बच्चे दिखे थे मॉर्निंग में। कौन से फीमेल? यहाँ पे है वो, क्या नाम है? शक्ति। शक्ति और कब्ज दिखे थे गार्ड को आज सुबह यहाँ पे। अच्छा, साथ में अभी साथ में ये आपको अगर फोटोग्राफी करनी है तो यहाँ की बहुत अच्छा लगेगा। So the first spot we came to was this water hole. As mentioned by our guide, the forest guard saw female tigress Shakti and her 3 cubs near this area in the morning. So it made sense to spend some time here. If you look closely, on the other side of the water is a crocodile resting. And on this side came a male Sambar Deer. The weather was kind of perfect to see the tiger. It was warm enough for them to move out for water, but not too hot as well that they keep resting in the shade. The other jeeps left the area quickly while we kept our patience. Capturing a tigress and her cubs in one frame was a dream for us, and a few minutes in the sun are totally worth for it. This was early February, and it had been quite a few months since it rained in Ranthambore. With monsoon still more than 5 months away, these deer species have to rely on the minimal vegetation left in the jungle, and sometimes to find food they have to move far distances. Like this one, as a loner, came all the way to this water hole to quench his thirst and hunger. We have generally noted that among the various deer species, Sambar deer are the most bold and confident around safari jeeps. Maybe because of their size or maybe something else, but they do not run away immediately unless you make a lot of noise. Smaller deer species like spotted deer, hog deer, etc. would disappear at the first sight. But we were not the only pair of eyes looking at this male Sambar deer. There were more. A big crocodile from the other side of the water, resting in the sun and dreaming to hunt down this deer. The crocodile anticipated whether to move or not. The Sambar deer is not a foolish animal too. He knows about the danger inside the water, even if it is hidden. He could easily take a step or two more and get those leaves, but he wants to stay at a safe distance from the water and uses his tongue to grab the leaves. Eating less is always better than being eaten. Anyway, Sambar deer are not an easy catch. The crocodile also has to calculate whether it is worth the effort or not. Had he been already in the water, he would have taken a chance. His movement now and the water splash will alert the deer immediately, and there is a chance he would escape. So the crocodile kept waiting, and the deer ate enough to get back to safety zone. Slowly, he moved away from the water, saving his back from the branches. And now that he had gained all the strength he needed, what do you think he would do next? He went to his fight club. Even though this deer was not a fully grown deer, but male deer are often seen fighting among each other to show dominance
and attract the females to mate. Well, Sambar Deer fights can get really brutal. This one, however, is more like a practice session. With no females around and less fear of predators, these deer are simply preparing themselves for the mating season. Similar to the world of humans, the competition to find the most attractive female is tough in animal kingdom as well. You want to have kids with the queen? You gotta fight the strongest male. So after watching the deer for a while and not getting any hints of the tigress Shakti and her cubs, we moved forward. One of the iconic areas of Zone 4 is the Malik Talab. Earlier in the morning, a few people saw T120, aka Ganesh, on the main road near the Malik Talab. So we started moving towards the area, and when we reached, there was a whole festival going on. ये आ गया क्लियर आ गया आएगा सामने आएगा आ गया ट्रांसफर पीछे लगा गाड़ी एक बार गाड़ी यहाँ पे बैठो ये पकड़ो आप कैमरा एक बार निकलेगा इधर निकलेगा अभी आपका एंगल किधर है? जो ना ऊपर पेड़ के पास चलो एक बार ठीक है आ रहा है साथ साथ चलेंगे नहीं आएगा आगे अभी तो कोई फायदा नहीं ये आ गया So chanting the name of Ganesh paid off. This is T120, much far from where we were with no road accessibility, ये आ गया yet so thrilling and beautiful to watch.